Okay, good evening everybody. लास्ट क्लास रे आम पढ़ी जनरल इनफॉरमेशन 100टा क्वेश्चन एबे चलो आउ 100टा क्वेश्चन सारदे जनरल इनफॉरमेशन जनरल नॉलेज बेसिकली ओके जार किसी प्रॉब्लम रोचे से माने कमेंट सेक्शन में पचारि पारे बुझेला और लाइक शेयर सब्सक्राइब समस्त कर दिंतु आमर डेली क्लास रोचे डेली सकाळ 10टा परठू क्लास रोचे डिपेंड करे सबुदिन सामान नुहे कौ दिन 3टा क्लास रोचे कौ दिन 4टा रोचे कौ दिन 5टा भी रही पारे एवं संध्या बेले सेमती 7टा परठू क्लास रोचे 7टार अच्छी सेमती 7टार क्लास हम पुणी एटू 8टार क्लास हम बुझे 9टार भी क्लास हो पारे ओके जो 7टा परठू सबुदिन आमर डेली क्लास रोचे सकाळ 10टा परठू एवं संध्या बेलू संध्या 7टा परठू ओके क्लास हो क्लास के मिस करनी ओके ओके चलो स्टार्ट करिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन व्हिच आर्टिकल आर्टिकल 45 ओके अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को आर्टिकल रे अछि 45 आर्टिकल रे अछि बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाउ मेनी स्टेट्स वेयर देयर इन इंडियन यूनियन at the time of independence time रे केतरा यूनियन थिला how many states were there in Indian Union at the time of independence time रे हमर भारत रे केतरा राज्य थिला हमर 10टा राज्य थिला बुझला 10टा राज्य थिला इंडिया रे 10टा राज्य थिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा in which year the state organization commission submitted its report को वर्ष स्टेट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट तार स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमिशन तार रिपोर्ट सबमिट करथिला को वर्ष 1956 ओके 1956 रे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमिशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ओके हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान किए कहले लाल बहादुर शास्त्री बुझेला लाल बहादुर शास्त्री कहते जय जवान जय किसान नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द प्रेसिडेंट्स ओथ इज मेंशनड इन को आर्टिकल रे आर्टिकल नंबर 60 प्रेसिडेंट्स ओथ इज मेंशनड इन आर्टिकल नंबर 60 नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऑन व्हिच डे श्रीमती इंदिरा गांधी was assassinated on which day 31 October 1984 okay on 31 October 1984 रे श्रीमती इंदिरा गांधी was assassinated okay next question देखिए डॉक्टर बी आर आम्बेडकर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन डॉक्टर बी आर आम्बेडकर बर्थडे केबे 14th April okay 14th April is Dr. B.R. Ambedkar's birthday next question देखिए on which day the design of national flag was adopted by Constituent Assembly India on which day को वर्ष national flag of India was adopted by Constituent Assembly of India को वर्ष adopt होइदिला national flag टा 22 जुलाई 1947 okay on 22 July 1947 national flag was adopted by a Constituent Assembly of India in which year present flag code of India come into effect on which year the present flag code of India come into effect on which year 2002 okay on 2002 present flag code of India came into effect okay next question who composed our national song किए कंपोज करथिले कि कंपोज बंकिम चंद्र चटर्जी ओके नेशनल सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया ओके हु वाज द चेयरमैन ऑफ IIND एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया Who was the chairman? Bipara
Moily. Okay, Bipara Moily was the chairman of IIND Administrative Reforms Commission of India. Next question: in which year administrative tribunals were set up in India? In which year administrative tribunals were set up in India? And which year? 1985. On the year 1985, administrative tribunal are set up in India. In which year education became current subject? Education became a concurrent subject. Education गोटे concurrent subject कोई year रही 1977. On the year 1977, education become a concurrent subject. Next question: on which year सर्व शिक्षा अभियान was launched? सर्व शिक्षा अभियान केवे लॉन्च होता? केवे 2001 रे बुझला 2001 रे सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च होता. The mid-day meal scheme as a national program of nutritional support was launched in the year. Mid-day meal टा हमर केवे लॉन्च होता? 1995 रे mid-day meal टा लॉन्च होता. ओके नेशनल नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेशनल बाल भवन नेशनल बाल भवन वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर. नेशनल बाल भवन केवे इंस्टीट्यूट होता? 1956. नेशनल बाल भवन वाज instituted in the year 1956. Okay, the National Council of Teacher Education, NCRT, NCT, National Council for Teacher Education, okay, was established on NCT केवे established होता केवे 1995 रे. okay, on the year 1995 the National Council of Teacher Education was established in the year 1995. next question देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान was launched in राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान was launched in 2009. माध्यमिक शिक्षा अभियान केवे लॉन्च होता? 2009 रे लॉन्च होता. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हिच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड केंद्रीय विद्यालय संगठन. केंद्रीय विद्या संगठन को गवर्नमेंट को वर्ष अप्रूव करथिला? को वर्ष 1962. केंद्रीय विद्यालय संगठन को केवीएस को 1962 रे गवर्नमेंट अप्रूव करथिला. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई वाज सेट अप इन द ईयर. सीबीएसई को वर्ष सेटअप करा जायतिला? 1929. ओके सीबीएसई वाज सेट अप इन द ईयर 1929. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए which year National Institute of Open School was initiated. National Institute of Open School was initiated in the year 1979. National Institute for Open School was initiated in 1979. Next question देखिए during which academic year the नवोदय विद्यालय समिति was launched. नवोदय विद्यालय समिति केवे लॉन्च होता? कोई ईयर रे? 1985 to 86 रे बुझेला 1985 to 86 रे नवोदय विद्यालय समिति वाज लॉन्च्ड. नेशनल लिटरेसी मिशन NLM वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ. जेतेबेले NLM लॉन्च होता से किए प्राइम मिनिस्टर थिले? राजीव गांधी का टाइम रे बुझेला राजीव गांधी का टाइम रे NLM लॉन्च होता. नेक्स्ट क्वेश्चन in which year the UGC came into existence. On which year UGC came into existence? UGC को वर्ष existence को आस्तिला? को वर्ष 1953. 1953 रे UGC came into existence. Next question which district was affected during district reorganization in Odisha. Which district was affected during district reorganization in Odisha. को district affect होता? कोटा कोई district भी affect है नथिला हैला. district reorganization टाइम रे सब district को ये करा जायतिला बुझला. एबे एमान को भितरु कोन सिटी नुहे बुझला कि कोन हेतिबो जदी आ. ओके ओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTET. CTET रो फुल फॉर्म कोन? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बुझला सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET रो फुल फॉर्म. हु बिलो वाज एसोसिएटेड विथ वुड्स डेस्पास.
हु बिलो वाज एसोसिएटेड विथ वुड्स डिस्पैच सहित किए एसोसिएटेड सर चार्ल्स वुड वुड्स डिस्पैच सहित सर चार्ल्स वुड एसोसिएटेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन व्हिच ईयर यूनाइटेड नेशन चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन वाज हेल्ड on which year 1989 on the year 1989 United Nations Child Rights Convention was held okay next question what is the full form of UNESCO रो full form टा कौन United Nations Educational Scientific Cultural Organization okay UNESCO रो full form है United Nations Educational Scientific Cultural Organization okay UNESCO in which year Tashkent agreement was signed को वर्ष Tashkent agreement signed हेतला को वर्ष 1966 on the year 1966 Tashkent agreement was signed in which year Indian rupee was devalued for the first time को वर्ष 1966 on the year 1966 Indian rupees was devalued for the first time devalued हेतला okay in which year Ramamurthy committee submitted its report on NPE National Policy on Education Ramamurthy committee केबे तार report submit करथिला केबे 1992 रे Ramamurthy commission तार report submit करथिला okay next question in which year the control school scheme was introduced in India रे control school ना central school control school दीजिए ओके छाड़ा केबे लॉन्च हेतला 1965 which country was largest educational institutions in the world which country was the largest educational institutions in the world largest educational institution कहाँ पाखे अच्छी चाइना पाखे ओके which country has the largest educational institution world रे सबुठ बेसी education largest educational institution चाइना पाखे रही बुझेगा what is the rank of India in the field of educational institution India रे rank केते educational institution रे third रे बुझेगा 3 नंबर रे India आसुची educational institution रे rank रे okay what is the recommended age group for secondary education in India what is the recommended age group for secondary education in India what is the recommended age group for secondary education ପାଇଁ को एज ग्रुप 14 ରୁ 18 वर्ष हमर सेकेंडरी एजुकेशन रो प्लस 2 एटा सब हायर सेकेंडरी ना सेकेंडरी एजुकेशन हमर 14 ରୁ 9th ରୁ स्टार्ट हुए ओके 9th to 10th तापर प्लस 2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ओके 11th 12th जोटा ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन who below is not associated with the evolution of modern educational system during the colonial era भितर मान भर किए एसोसिएटेड नथिले इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम समय किए लॉर्ड मायो अवेलेबल नथिले बुझला आ लॉर्ड मैकॉले लॉर्ड चार्ल्स वुड नन ऑफ दिस हबन छड़ा ओके लॉर्ड मायो अवेलेबल नथिले okay Lord Mayo is not associated with the evolution of modern educational system during the colonial era next question देखिए who below was not a part of education reform in India एमान को भीतर किए was not a part of education reform रो गोटे पार्ट नुहे कि के सनातनम is not a part of education रिफॉर्म इन इंडिया एल मुदालियार एस राधाकृष्णन डीएस कोठारी एमान सब एजुकेशन रिफॉर्म रो गोटे पार्ट समस्त कमिशन थाए ना राधाकृष्ण कमिशन मुदालियार कमिशन कोठारी कमिशन तो सनातनम इज नॉट ए पार्ट ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया ओके व्हिच करेक्ट स्टेटमेंट इज परमिएबल कोटा सवर्जिन डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक सेक्युलर रिपब्लिक
sovereign social secular democratic republic, socialist secular sovereign democratic republic, sovereign secular socialist democratic republic कोड हवा कोडा sovereign social secular democratic republic, sovereign socialist secular democratic republic बुझला एटा मन रखि नबा बुझला sovereign socialist secular democratic republic. Okay, next देखिबा which one is the wrong pair एमान भितर wrong pair कोडा ऑस्ट्रेलिया कार्बेरा, पोर्तुगाल लिस्बन, कनाडा मॉन्ट्रियल, ऑस्ट्रिया वेनिया कोडा कनाडा मॉन्ट्रियल इज द wrong pair. Okay, next question देखिबा identify the odd one DPP SSA NPE MGNREGA कोडा MGNREGA बुझला इधर कौन DPP अच्छी शिक्षा नहीं की NPE शिक्षा अनुसार SSA भी शिक्षा MGNRE टा अलगा. Okay, who below was education minister of Odisha किए मानक भितर जने एजुकेशन मिनिस्टर थिले ओडिसा रो किए बिंबाधर कंवर बुझला बिंबाधर कंवर वाज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ओडिशा. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स कंपोज्ड ओडिशा इन 1936 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट कंपोज्ड इन ओडिशा इन 1936 रे ओडिशा रे केतरा डिस्ट्रिक्ट करा जायतिला 6टा डिस्ट्रिक्ट बुझला ओडिशा रे 6टा डिस्ट्रिक्ट करा जायतिला 1936 रे. आइडेंटिफाई द ऑड वन सोन यमुना कावेरी और सतलेज कोडा हबो कावेरी. ओके कावेरी टा चल गया. इन द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती which one was not spelled out as basic structure of the Indian Constitution. In the judgment of Kesavananda Bharati, which one of the is not spelled out as a basic structure of the Indian Constitution. Indian Constitution basic structure कोड नुहे बोली से कहछि कोड single citizenship is not the basic structure of India. Okay, supremacy of constitution, separation of power, secular character of the constitution एगुडा सब कोन basic structure of the Indian Constitution. Next question देखिए which article in part 3 connect education with democratic spirit and value. Which article in part 3 connect education with democratic spirit and value. Education को democratic spirit and value रे किए connect करतला article 29 और 30. Article 29 and 30 in part 3 connect education with democratic spirit and values. Okay, which article says the state shall promote with special care the educational interest of weaker section. Which article says? Article 46. Article 46 says the state shall promote with special care of educational interest of weaker section. Okay, which article says the state shall make special provision for education in women and children. women और children मान को भीतर special provision create करवा को article रे लिखा जाय छी को article article 15 रे. Okay, article 15 रे लिखा जाय छी. Next question, which one below is wrong as per the timing हिसाब रे कोडा wrong. राधाकृष्ण कमिशन 1948 secondary education commission 1904 ना secondary education commission 1904 एटा भूल हवा. कोठारी commission 1964 university of education commission 1948-49 ठीक अछि. ओके एटा भूल हवा बुझला आंसर हवा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in which year a policy for national
national system of education was announced? In which year a policy for national system of education was announced? On which year? 1986. On the year 1986, a policy for national system of education was announced. Which one below is not associated with education? एमान भितर कोटा एजुकेशन सहित associated नुहे कोटा ऑपरेशन फ्लड रा एजुकेशन सहित associated नुहे आउ सब एजुकेशन सहित associated खाली फ्लड टा associated नुहे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which committee reviewed NP in 1986? Which committee? Acharya Ramamurthy committee reviewed in NP in 1986. Which judgment declared secularism as a basic feature of Indian constitution? Which judgment? Car judgment declared secularism as a basic feature of the Indian constitution. बोमाई बुझला बोमाई judgment declared secularism as a basic feature of the Indian constitution. Okay, next question. Which article constitution states that the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of law within the territory of India? एटा किए कहला को आर्टिकल लिखा जाय Article 14. Okay, Article 14 says the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of law within a territory of India. Okay, next question देखिए. Which prime minister was not education minister of India as well? किए हमारे education minister नथिले श्रीमती इंदिरा गांधी education minister नथिले राजीव गांधी VP सिंह अटल बिहारी वाजपेयी मान सब एजुकेशन मिनिस्टर भी थिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एजुकेशन मिनिस्टर किए थिले मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एजुकेशन मिनिस्टर In which year the first education policy of India was announced? In which year the first education policy of India was announced? को वर्ष 1968 रे. On the year 1968 the first education policy of India was announced. Okay, next question. In which year the second education policy of India was announced? In which year the second education policy was announced? On which year? On the year 1986. Second education policy of India was announced on the year 1986. Second education policy 1986 रहला. What is the full form of DERP? DERP ର full form कौन? District Education Revitalization Program. District Education Revitalization Program. Okay, District Education Revitalization Program DERP. Which one from part of NPE 1986? Which one formed part of NPE in 1986? Part of NPE एमान को भीतर किए गोटे part of NPE थिला किए? all of these universal access enrollment, revival of Sanskrit and other classical language, universal retention of children up to 14 years. Okay, एटा सब गोटे पार्ट थिला NPE रो 1986 रो. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year NCERT was formed? NCERT केबे फॉर्म हेतिला? NCERT 1961. ओके 1961 रे NCERT फॉर्म हेतिला. 1961 रे NCERT फॉर्म हेतिला. Which education policy was called radial restructuring? Which education policy? Education policy 1986 was called radial restructuring. Radial restructuring. Okay, education policy 1968
sorry 1968 86 no 68 was called radial restructuring. Next question, which education policy adopted child centered approach? Which education policy adopted child centered approach? किए करथिला को education policy? NPE 1986 was child centered. Okay, 1986 was child centered approach. By which year national program for education for girls and elementary level NPEGEL wanted to achieve the objective? को वर्ष national program for education of girls at elementary level wanted to achieve the objective? को वर्ष 2010 बुझला 2010 रे national program for education of girls at elementary level wanted to achieve the objective. Okay, next question देखिए, in which year राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लॉन्च? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केबे लॉन्च हेतला? 2009 रे बुझला 2009 रे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लॉन्च हेतला. हु लॉन्च्ड साक्षर भारत किए लॉन्च करथिले? मनमोहन सिंह बुझला साक्षर भारत मनमोहन सिंह लॉन्च करथिले. इन व्हिच ईयर साक्षर भारत प्रोग्राम वाज लॉन्च? को वर्ष साक्षर भारत प्रोग्राम टा लॉन्च हेतला? 2009 बुझला 2009 रे साक्षर भारत प्रोग्राम टा लॉन्च हेतला. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एटा कोन? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA वाज लॉन्च्ड इन द ईयर? RUSA केबे लॉन्च हेतला? केबे 2013 रे. ओके 2013 रे RUSA लॉन्च हेतला. The universalization of elementary education was the main objective of SSA सर्व शिक्षा अभियान. Which form from which year? 2001 to 2002. Okay, 2001-2 रे हिला. The universalization of elementary education was the main objective of SSA from which year? 2001-2 रे universalization of elementary education was the main objective of सर्व शिक्षा अभियान हिला. Okay, next question, who is known for his urge for total revolution in India? किए तार total revolution in India ର अर्ज किए नहीं थिला? JP. Okay, JP नहीं थिला total revolution for India. Okay, who was spiritual successor of Mahatma Gandhi? Who was spiritual successor of Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी का spiritual successor किए थिले? किए? विनोबा भावे. Okay, विनोबा भावे was the spiritual successor of Mahatma Gandhi. Next question, who was education minister of India when national policy on education was launched? National policy on education was जेतेबेले लॉन्च हेतिला सेतेबेले इंडिया रो एजुकेशन मिनिस्टर किए थिले? NPE जेतेबेले लॉन्च हेतिला इंडिया रो एजुकेशन मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थिले बुझला PV नरसिम्हा राव थिले. Who was the education minister of India when national policy on education was launched? PV Narasimha Rao was the education minister of India when national policy on education was launched. Okay, next question देखिए, identify the one who was education minister of India. Identify the one who was education minister in India. किए education minister थिला इंडिया रो? किए थिला? VKRV Rao. VKRV Rao was the education minister of India. Okay, next question, who was vice president of India during 1977-72? 1977-72 रे किए vice president थिला? M Hidayatullah. Okay, M Hidayatullah was the vice president of India during 1977-82. During 1977-82 भितर vice president किए थिला? M Hidayatullah. Okay, next question, which country is not a
permanent member of Security Council? Which country is not a permanent member of Security Council? Security Council रो permanent member किए नथिला को country टा नथिला कोडा Germany. Germany is not the permanent member of Security Council. Germany is not the permanent member of Security Council. Okay, next question. Name the first person to go to the space. जे first space को जाइतिला. Name the first person जे first state को जाइतिला, जो space को जाइतिला. किए जाइतिला? Yuri Gagarin. Well, Yuri Gagarin was the first person to go to the space. Yuri Gagarin was the first person to go to the space. In which year man landed on moon? को वर्ष मनीष मून रे लैंड करथिला? को वर्ष 1969. On the year 1969 man landed on moon. Okay, in which year? On the year 1969 man landed on moon. Next question. Operation Blackboard is a part of NCERT program NP 1986 Kothari Commission. None of these. कहाँ program करे? NP 86 रा program बुझला. Operation Blackboard was a part of NP 1986. Operation Blue Star. Operation Blue Star was against what? Against Sikh militants of Golden Temple. Sikh militants of Golden Temple का विरोध रे ऑपरेशन ब्लू स्टार हेतला. ओके, सिख मिलिटेंट्स ऑफ गोल्डन टेम्पल ओके तांको विरोध रे कोन हेतला? ऑपरेशन ब्लू स्टार हेतला. Sikh militants of Operation Blue Star is related to Sikh militants of Golden Temple. तांको विरोध रे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हेतला. ओके, पोस्ट कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन. पोस्ट कारगिल विजय दिवस केवे सेलिब्रेट कर जाए? 26 जुलाई. ओके, पोस्ट कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. which schedule is added by 73rd Constitution Amendment Act? Which schedule is added by 73rd Constitution Amendment Act? Which schedule? 9th schedule ना 11th schedule बुझला. 11th schedule is added by 73rd Constitution Amendment Act. 11th schedule has got how many times? 29 times. Okay, 11th schedule was got 29th time. Okay, 11th schedule has got 11th schedule was got 29th time. Okay, the 12th schedule is related to urban government. बुझला, urban government. The 12th schedule is related to urban government. The 12th schedule is related to urban government. Next question देखिए. The 12th schedule has how many items? The 12th schedule has how many? 18 items. Okay, the 12th schedule has 18 items. The 12th schedule has 18 items. Next question देखिए. Who was the chairman of Secondary Education Commission? Who was the chairman of Secondary Education Commission? K. A.L. Mudaliar was the Secondary Education Commission chairman of Secondary Education Commission. A.L. Mudaliar was the chairman of Secondary Education Commission. Okay, next question. Identify the wrong statement. Wrong statement I want to go. There was a plan holding between 1968-69. Operation Blue Star was done in June 1984. Okay, Chinese aggression against India was in 1963.
इंदिरा गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1966 रॉन्ग स्टेटमेंट कोटा एटा बुझला दिस इज रॉन्ग ओके चाइनीज एग्रीगेशन अगेंस्ट इंडिया वाज इन 1963 चाइनीज एग्रीगेशन है नथला ओके देयर वाज ए प्लान होल्डिंग बिटवीन 1966 to 69 एटा भी ठीक अछि ऑपरेशन ब्लू स्टार इज डन इन जून 1984 ठीक अछि इंदिरा गांधी वाज बिकम प्राइम मिनिस्टर इन 1966 एटा भी ठीक अछि ओके आइडेंटिफाई द करेक्ट वन एमान भीतर करेक्ट कोटा बी कोटा एडी गोरवाला कमिटी वाज फॉर economic reforms okay एडी गोरवाला कमिटी was for economic reforms okay एडी गोरवाला कमिटी was for economic reforms okay next question देखिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी was established in बॉम्बे यूनिवर्सिटी केबे established हेतिला 1857 बॉम्बे यूनिवर्सिटी was established in 1857 Bombay University was established in 1857 okay Taxila University venue is now a part of Taxila University venue address ta now a part of Pakistan Taxila University venue is now a part of Pakistan okay next question the 86th amendment is instrumental in The 86th Amendment is instrumental in what? In all of these, okay. In all of these, inserting Art 21A, giving RT a proper place, modified Art 45, okay. 86th Amendment is instrumental in all of these. Next question. Miraben was the followers of what? Miraben was the followers of Mahatma Gandhi. Okay, Miraben was the followers of Mahatma Gandhi. Aryabhatta was India's renowned what? Renowned कौन? आर्यभट्ट कौन थिले? मैथमेटिशियन थिले बुझला आर्यभट्ट जने मैथमेटिशियन थिले नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया बोली क्या कह जाए हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल ओके वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोली कह जाए बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन मारिया मोंटेसोरी नेम इज एसोसिएटेड विथ को एजुकेशन रे चाइल्ड एजुकेशन बुझेगा चाइल्ड एजुकेशन एसोसिएटेड मारिया मोंटेसोरी स्कूल जोड़ा कह जाए ओके क्या ना रही मारिया मोंटेसोरी ना रही पिंक सिटी एक्सप्रेस रन्स बिटवीन को क्या भितर पिंक सिटी एक्सप्रेस रन करे दिल्ली जयपुर बुझला दिल्ली रू जयपुर भितर पिंक सिटी एक्सप्रेस रन करे ओके गोपाल कृष्ण गोखले वाज एसोसिएटेड विथ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ओके गोपाल कृष्ण गोखले वाज एसोसिएटेड विथ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले वाज एसोसिएटेड विथ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी द फर्स्ट navigator to soil around the world was the first navigator to soil around the world was किए थे किए Magellan बुझला Magellan was the first navigator to soil around the world okay Magellan was the first navigator to soil around the world A.L. Mudaliar जने कौन थिले एजुकेशनलिस्ट बुझला A.L. Mudaliar was an educationalist in which year Utkal University was founded Utkal University को year फाउंड हेतिला को year 1943 रे बुझला 1943 रे उत्कल यूनिवर्सिटी फाउंड हेतिला ओके आज मैं एति थाउ नेक्स्ट क्लास रे आउ तो करबा ओके बाय